Okay, next topic we will cover will be the relativistic addition of velocities, or these are called velocity transformations in relativity. What we'll be doing in this article is we take two frames of references. One is S frame of reference and second is S dash frame of reference. And both of these frame of references, they are inertial. They are inertial. Now, you see, let us say that this second frame of reference S dash is moving with the uniform velocity V with respect to first frame of reference. Your first frame of reference S है यहाँ पे and S dash is this, and this is moving with the uniform velocity V towards positive x-axis. Second thing, now let us see or let us say that a particle or a body that is moving with the uniform velocity u with respect to s frame of reference with respect to the observer who is sitting in s frame of reference. मतलब कोई भी चीज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से चल रही है, फॉर एग्जांपल किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो जो ऑब्जर्वर s फ्रेम में बैठा हुआ है वो उसको मेजर करता है वेलोसिटी एज u, और उसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, उसको अपीयर हो रही है u dash. So u and u dash, we have written u is the constant linear velocity with respect to the observer of s frame of reference, and u dash is the velocity with respect to the observer of s dash frame of reference. पार्टिकल एक ही है, तो जो s फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा है उसको लगता है कि इसकी वेलोसिटी u है, और जो ऑब्जर्वर s डैश में बैठा हुआ उसको लग रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, u डैश है. एंड नाउ लेट अस से दैट the components of the velocities as observed by the observers in the two frames of references are, जो s में बैठा होगा ऑब्जर्वर उसको लगेगा the velocity is ux along x axis, uy along y axis and uz along z axis, whereas the observer who is sitting in s dash frame of reference, he will measure the velocity of the particle as ux dash, uy dash and uz dash along x, y and z axis respectively. तो ये यहाँ पे सिचुएशन अभी है. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेलोसिटीज कंपोनेंट्स, कि ux डैश के साथ कैसे रिलेटेड होगा, uy के साथ क्या रिलेशन आएगा, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ uz डैश विद uz and what will be the relation with the time. So these are the only we are concerned about the velocity transformations. So we will be seeing relation between ux dash, uy dash and uz dash, which are called the velocity transformations, or these are called relativistic addition of velocities. तो इसको अब सॉल्व करने के लिए, सिंस दीज टू फ्रेम्स आर इनर्शियल एंड वन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम विद द वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v, so which transformations we apply? We always apply Lorentz transformation as far as this relativity is concerned. So here we know that these are the Lorentz transformations which we have studied. We know that x dash is given by x minus vt divided by 1 minus v square by c square under root. Y dash is y, z dash is equal to z. As there is no motion along y and z axis, the particle is moving only along x axis. So there is no change along y and z, we are not measuring it. And similarly, the time का जो आपके पास आता है, that is t dash is equal to t minus v by c square into x divided by 1 minus v square by c square. So these are called space and time coordinates, and which we measure and how they are related. This article we have done as far as Lorentz transformations are concerned. Now you see, just to see the relation between these velocities, what we do, this is this. तो हम क्या करते हैं इसको, this is we say x dash is equal to x minus vt over 1 minus v square by c square. हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, we differentiate these equations. तो इसको differentiate करो तो ये क्या दे देगा, this implies differentiating these equations. If this is equation number 1 2 3 4, तो dx का हो गया dx dash is equal to x का हो गया dx minus v. V is constant, this is constant velocity, so v t का हो गया dt divided by 1 minus v square by c square under root. And this implies, इसका differentiation आ जाएगा dy dash is equal to
dy. This will give you dz dash is equal to dz, and this fourth equation will give differentiation dt dash. This is equal to dt minus v by c square. x है तो यहाँ पे हो गया this is dx divided by 1 minus v square by c square under root. So we have differentiated these equations. ये डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, सिंपल लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है, उसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन दीज टू. सो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इफ आई वांट टू राइट कि व्हाट इज ux डैश, व्हाट इज ux डैश, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर ux डैश? अब देखिए ux, uy, uz, ux dash, uy dash, uz dash, they are the components of velocities along x, y, z and z direction respectively. So if I want to write what is ux dash, velocity क्या होता है? Distance upon time, distance क्या होगा? dx dash upon dt, dx dash upon dt. Now we know what is dx dash, sorry this is t dash. ux dash is equal to dx dash upon dt. तो dx dash ये है, dt dash ये है, यहाँ पुट कर दीजिए. तो what it will give? dx dash is equal to, this is the value, this is dx minus v dt divided by 1 minus v square by c square under root divided by dt dash. तो इसे dt dash तो ये ऊपर चला जाएगा 1 minus v square by c square under root, और ये नीचे आ जाएगा this is dt and minus v by c square into dx. ये कैंसिल हो गया and we are left with dx minus v dt divided by this is dt minus v by c square into dx. Now what we do, आप राइट हैंड साइड पे dt से डिवाइड कर दीजिए. सो दिस इज डिवाइडिंग, इसको डिवाइड किया, दिस इज dx by dt minus v, this is dt by dt divided by dt by dt minus v by c square into dx by dt. So this is what is dx upon dt. Here dx dash over dt. If it is ux dash, then what is dx by dt? This is ux minus v. dt by dt is 1 divided by dt by dt is 1 minus v by c square, and this is, you see, dx over dt. Again this is ux. This is ux. So ux dash is equal to ux minus v, and we got this is 1 minus v by c square into ux. ये आपके पास इक्वेशन आ गई, and let us write this to be equation number 1. Similarly we can find uy dash and uz dash. तो uy dash निकाल लीजिए. What will be uy dash? Similarly what will be uy dash? ये क्या हो जाएगा? dy dash by dt dash. Again same, dy dash क्या होता है आपके पास? dy dash is equal to dy and simply dt dash. dt dash आपने पहले यहाँ पे भरा हुआ है. This is dt dash. तो dt dash की वैल्यू आपके पास क्या आई थी वहां पे? dt, this is dt minus, वो फॉर्मूला से लिख लो आप, v by c square into क्या लिखा था आपने वहां पे? we had written this is dt dash, yes, dt minus v by c square into dx and divided by whole divided by, इसकी वैल्यू आपके पास थी 1 minus v square by c square under root. So this is 1 minus v square by c square under, ये आ गया. और this will give you uy dash is equal to, this is dy divided by, this is dt minus v by c square into dx, और ये ऊपर चला जाएगा into 1 minus v square by c square under root. And now again इसको आप dt से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को. दिस विल गिव यू dy by dt into 1 minus v square by c square under root divided by dt by dt is 1 minus v by c square dx over dt. Again this is dx over dt. This is equal to, what is dy over dt? This is uy into 1 minus v square by c square under root divided by 1 minus
v by c square into what is dx over dt? This is ux. This is ux. So we got this as this. So this is uy dash. ये आपने uy dash निकाल लिया. This is ux dash. This is uy dash. Equation 1. This is equation number 2, which we have calculated. And similarly, you can calculate uz dash. So the only difference will be, similarly, ये आ गया, ये uy dash आया. Similarly, you can find uz dash. This will give you uy की जगह यहाँ पे क्या रहेगा? uz 1 minus v square by c square under root divided by 1 minus v by c square into ux. This is equation number 3. So this will give you equation number 3. अब ये जो आपके पास है equation number 1, 2 and 3. These are called velocity transformations. These are called velocity transformation. ये relation आता है. अगर आपको एक पता हो, अगर if you know what is ux dash, then obviously ux dash is equal to this. और inverse, और अगर ux की टर्म में लिखना है तो ux will be equal to ux dash माइनस v की जगह क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस v हो जाएगा. And you can find the inverse velocity transformations also. So equation number 1, 2 and 3, they are called velocity transformation or relativistic transformations of velocities. So these are called this. Now अब ये देखिए आपके पास क्या आया. We can discuss 3 cases. Or we can discuss one case. आप एक केस कंसिडर कर सकते हो. If v is much smaller than c. If v is much smaller than c. अगर v की वैल्यू आपके पास बहुत कम है c से, then you see this factor v by c square, ये फैक्टर यहां से v by c square, ये फैक्टर v by c square, this factor, and this is v square by c square, ये वाला फैक्टर. जहां पे भी आपके पास v is much smaller than c, then this factor can be deleted. तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो. v square by c square will be very small in comparison to 1. It will be much smaller in comparison to 1 and we can ignore these factors. तो यहाँ से अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो यहाँ से क्या बचा? ux dash is equal to ux minus v. ये आ गया. What is uy dash? This will give you, ये भी इग्नोर हो गया, ये भी इग्नोर हो गया, क्या बचा? uy. And similarly uz dash, we can ignore this factor, ये भी इग्नोर हो गया, uz dash is equal to uz. Then you get these transformations. U dash is equal to u minus v. Similarly, ux dash is equal to ux minus v. Uy dash is equal to uy. Uz dash is equal to uz. तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं. और ये कौन सी है ट्रांसफॉर्मेशन? विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. क्लासिकल वाली जो थी आपके पास, क्लासिकल एडिशन ऑफ वेलोसिटीज. तो क्लासिकल एडिशन ऑफ वेलोसिटीज कब आया? व्हेन v is much smaller than c. कि जब वेलोसिटी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एस डैश की बहुत ही कम होगी इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन यू सी दिस रिलेटिविस्टिक फिनोमेना विल गो टू द क्लासिकल. तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ये क्लासिकल केस आ जाएगा एंड दिस विल बी रिड्यूस्ड. एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस. फॉर एग्जांपल इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ux टू ux डैश जाना है आपने, तो यहां से क्या हो जाएगा? ux विल बी प्राइम को अनप्राइम कर दीजिए और v को माइनस v से कर दीजिए. So ux will be equal to ux dash, यहाँ पे हो जाएगा प्लस v divided by 1 minus, और this will be plus v by c square into ux dash. तो ये आ गया आपके पास ये इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन. ये इसकी सिमिलरली इसकी इनवर्स क्या हो जाएगी? uy dash will be equal to u by, अब uy कर लो, uy से uy डैश में है तो दिस इज, यहाँ पे आपने uy लिख दिया तो यहाँ पे प्राइम कर दीजिए uy डैश 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर ऐसा, बिकॉज स्क्वायर है तो वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय v को माइनस v से कर दीजिए. सो दिस इज 1 प्लस v बाय c स्क्वायर इनटू ux. एंड सिमिलरली uz dash you can calculate and that will give you, these are called inverse velocity transformations. So this is all about your velocity transformations and inverse velocity transformation as far as this relativity is concerned. Now one very important concept or
पॉइंट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस आर्टिकल कि आप ये बताइए कि जैसे देखिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट कैसे रहती है ये भी आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो. वी कैन एक्सप्लेन इट फ्रॉम हियर कि रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज predicts that the velocity of light is constant as it is viewed from s और s dash, तो वो सेम ही रहता है. तो हमारे